मीन्स वहां पर सॉलिड ही सॉल्वेंट है। अब सॉलिड में या तो सॉलिड डिजॉल्व होगा, सॉलिड में डिजॉल्व होगा लिक्विड, या सॉलिड में डिजॉल्व हो जाएगा गैस। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, इधर कंटिन्यू करेंगे। And a gas, a liquid or a solid is the solute is called a liquid solution. Oxygen dissolved in water is an example of gas in liquid type of solution. Ethanol dissolved in water is an example of liquid and liquid type of solution. While glucose dissolved in water is an example of solid in liquid type of solution. These liquid solutions occupy a special place in chemistry, as most chemical reactions take place in solution phase. Similarly, a solution in which a solid is the solvent and a gas, a liquid or a solid is the solute is called a solid solution. A solution of hydrogen in palladium is an example of gas in solid type of solution. Hydrogen plus palladium. An amalgam of mercury with sodium is an example of liquid and solid. Hydrogen palladium means what? This palladium, इसको बोलेंगे हम लोग हाइड्रोजिनेटेड पैलेडियम, मीन्स हाइड्रोजन इज डिजॉल्व्ड इन पैलेडियम, द इंटरस्पेसिफिक, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल जो स्पेसेस होते हैं, इसको बोलते हैं पैलेडियम। एक तुम्हारा मेटल है, मेटल यानी कि इसमें बहुत सारे कॉन्सेंट्रेटेड क्या होंगे, पैलेडियम के एटम्स होंगे। एटम्स के बीच में जो स्पेस होती है वहाँ पर हाइड्रोजन आके अपना स्पेस ले लेगा। अब स्पेस लेते ही ये जो हाइड्रोजन होती है ये अवेलेबल होगी, इसको याद होगा क्लास 11th आपने स्टडी किया होगा, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। When alkenes are being hydrogenated in presence of palladium, so these break that double bond and they take the position with carbon atom, right? Type of solution. While copper dissolved in gold is an example of solid in solid type of solution. Out of the various types of solutions we just discussed, the most significant are those that are in the liquid phase. सबसे इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पर पढ़ना है लिक्विड फेज के सोल्यूशन। दैट मीन्स हम इतना टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके इस सोल्यूशन चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। बाकी जो है गैसेस सोल्यूशन और सॉलिड सोल्यूशन इन्हें हमें डिस्कस नहीं करना है, दिट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सोल्यूशन, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली द लिक्विड सोल्यूशन, मीन्स सॉल्वेंट इज लिक्विड, liquid dissolves gas, liquid dissolves liquid, and liquid dissolves solid. We will therefore confine our study to binary liquid solutions. Binary liquid. The concentration of a solution is defined as the amount of solute present in a known amount of solvent or solution. Concentration can be expressed qualitatively as well as quantitatively. Qualitatively, we describe a solution as either dilute or concentrated. When a solution contains a small proportion of solute relative to the solvent, we call it a dilute solution. On the other hand, a concentrated solution contains a large proportion of solute तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए आपने, concentration means more the solute particles, more is the concentration of that particular solution. तो जब भी आप डिस्कस करेंगे कि concentrated solution, that means उसमें solute के अमाउंट ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है देखो ज़रा ध्यान से, अगर solute के पार्टिकल ज़्यादा हो जाएंगे तो ऑफ कोर्स वहाँ पे पानी कम हो जाएगा, यानी लिक्विड कम हो जाए। लिक्विड जिसमें कम होता है उसे हम बोलते हैं क्या हो गया है, कॉन्सेंट्रेट हो गया, राइट। मीन्स solute ज़्यादा है उसमें भी। सपोज करो हमारे पास शुगर सिरप है, शुगर सिरप आपने बनाया, यानी कोई जनरली एक शरबत बनाया और वो बहुत ज़्यादा उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा उसमें पानी है। तो आप क्या करना चाहते हो, यू वांट टू गेट इट कंसनट्रेटेड, दैट मीन्स यू हैव टू बॉयल इट। जब आप बॉयल करोगे तो वो क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। तो जैसे इवेपोरेशन होगा वाटर वेपर तो उड़ जाएंगे, लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल्स तो उसी में रहेंगे। तो जब सॉल्यूट पार्टिकल उसी में रहेंगे तो क्या कहेंगे कि नाउ ये कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है। दैट मीन्स पानी कम हो रहा है तो सॉल्यूट पार्टिकल तो उतने ही है, सॉल्यूट पार्टिकल तो कम नहीं हो जाएंगे। तो सॉल्यूट पार्टिकल का बढ़ जाना या लिक्विड का कम हो जाना, इसको बोलेंगे मोर कॉन्सेंट्रेटेड है। कंटिन्यू करें। To the solvent.
This qualitative means of describing concentration, although useful, sometimes leads to confusion, and thus arose the need for a quantitative description of solutions. Quantitatively, the concentration of a solution can be described in several ways. Note it down. These methods are mass percentage, volume percentage, mass by volume percentage, parts per million, mole fraction, molarity, molality. Let's discuss these methods one by one. वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे हम लोग. Let us first discuss the mass percentage or weight by weight percent.